Yes. Good morning once again, everyone. So how many of you have actually tried to solve this? Just raise your hand. Like हमारा PYQ के बाद. So Snigdho, okay, Snigdho, Priyanshu, Sampada, Vivek, okay. So after solving PYQ, I guess you should be able to solve some problems, right? At least 50% of problems बन जाने चाहिए. ठीक है? क्या बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे? Priyanshu, Sampada, were you able to solve the problems? Tell me. You can just speak or message. Were you able to solve the problems? बन रहे थे. हाँ, obviously पूरे तो अगर पूरे बन जाएंगे फिर तो जरूरत ही क्या है मेरी, right? है ना? Okay, चलो. So let us see the problems. So I guess first one easier. First one काफी easier. Yes or no? First one the theory है सिर्फ. Yes or no? Tell me. First one. So tell me what is the answer of first one? जल्दी जल्दी. First one. क्या आंसर क्या है? Because first one is actually theory. Guys, first one, what do you think? You can just answer the poll. Okay, answer the poll. There is some. Okay. So first question says two identical sphere, right? Two identical sphere kept at fixed distance. Now the potential energy of mass m, right? When it takes from surface of one sphere to other sphere, right? Answer. Tell me what would be the answer? Decreases continuously, increases continuously, first increases, then decreases. Tell me. So you have to see what is the formula of potential energy. Tell me. What is the formula of potential energy? You tell me what is the formula of potential energy? Step by step now. Correct. Right? है ना? When you talk about this R, if it is at this distance, think about it. If it is at this distance, है ना? Okay. Now suppose this distance is L. ये distance L है. ये हो गया R. This is also R. And if it is at this point, which is X. Okay. Now tell me what is this distance? यहाँ से लेकर यहाँ तक का distance कितना हो जाएगा? Tell me what would be this distance? That distance would be R plus L. So R plus L यहाँ तक minus X. Yes or no? Right, for this mass. Now for this, it will be what? For this, it will be what? R plus X, yes or no? Minus G M1 M2 by R plus X. Anyone have any issue in this? Right? Yes or no? Yes or no? है ना? तो यहाँ पे तुम पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो हम निकाल लेंगे. माइनस जी M1 M2 कॉमन. तो बताओ यहाँ पे एलसीएम निकल जाएगा ना. This plus this calcium, right? So in denominator we will get what? R plus L minus X into R plus X, and in numerator XX will get cancelled, right? XX will get cancelled. If you will add, XX will get cancelled, right? Or don't do this, है ना? ये जरूरत नहीं है. तुमको क्या चाहिए? तुमको चाहिए क्या? Tell me. You need to know that what is the change, right? है ना? So you have to find what? Du by dx.
Okay, change in potential energy with respect to distance. Yes or no? That's what you need to find, right? How the potential energy is changing with respect to distance. Okay, so minus g m1 m2 तो बाहर है. बताओ, अब बताओ 1 by r plus l minus x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेल मी. r और l तो कांस्टेंट है ना, तो क्या हो गया 1 by x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x पर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेल मी. राइट एवरीवन, टेल मी. 1 by x पर माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? टेल मी गाइस, what is the differentiation of 1 by x? Differentiation of 1 by x. डिफरेंशिएशन बेसिक फार्मूला है ना भाई, बेसिक फार्मूला x पावर n वाला बेसिक फार्मूला है, राइट? इट इज x पावर minus 1, so it is minus 1 x पावर minus 2, राइट? वेरी गुड, है ना? सो यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, दिस इज 1 by a constant r plus l is a constant, right? Minus x. So I don't have to worry about this constant. Yes or no? Do I need to worry about this constant? Tell me. Do I need to worry about this constant? No, no, right? So it will be what? R plus L minus X. Okay, right? Minus will be outside, right? Because of this and because of one power also, it will be outside. So plus minus 2. Yes or no? Yes or no? Tell me. 1 by minus x का differentiation will be just x power minus 2. Yes or no? Because एक माइनस था ऑलरेडी और एक बार डिफरेंशिएशन के कारण माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट? द सेम थिंग दैट वी हैव टू डू, है ना? राइट? सो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? इसका डिफरेंशिएशन हो गया r plus l minus x to the power minus 2. Now 1 by x का डिफरेंशिएशन we know, right? 1 by x का डिफरेंशिएशन is minus x to the minus 2, right? So इसका क्या हो जाएगा? minus r plus x to the minus 2. Okay, wait guys, something happened. Just give me a minute. Okay, right. So ये सबको समझ में आ रहा है? ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ चलो, यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes or no? Tell me. Preeti, Ananya, Bhavna, Reshma, why we are doing differentiation? Are you getting? Zan, Yashika, you should understand why we are getting differentiation, right? Because we need to find that how it is varying, है ना? बाद में हम समझाएंगे तुम लॉजिकली कैसे सोच सकते हो, ठीक है? राइट? बाद में हम लोग समझेंगे कि लॉजिकली कैसे समझ सकते हैं. Okay. Now tell me, do you think that there will be a point at which tell me potential will be 0, right? Because if I make it equal to 0, if I made this equal to 0, है ना, तो क्या हो जाएगा? r plus l minus x 1 by, ठीक है, का होल स्क्वायर माइनस 1 by r plus x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट? है ना? है ना? तो यहाँ पे इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? r plus l minus x is equal to r plus x, right? Yes or no? r कट गया, x उधर चला गया, तो क्या हो गया? x is equal to l by 2. Means at center
the potential will be zero, yes or no? Tell me, हाँ या ना? At center the potential or potential energy would be zero. Make sense? Right? The change in potential, right? Du by dx, I'm talking about du by dx, na change in potential, है ना? Change in potential will be zero, yes or no? Right? So if change in potential is zero, which means either it will be maximum or minimum, yes or no? Either at this point the potential energy will be either maximum or minimum, because we know ना, right? जब कोई भी चीज चेंज होती है तो यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है? जीरो, which means it is either maximum, this is maximum, और अगर ऐसा चेंज हो रहा है then it is minimum, right? So if you can find that this is maximum or minimum, you can say ना कि पहले क्या है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, yes or no? Yes or no? Tell me guys. Right? Okay, now you can check just by looking at the sign. ठीक है, यहाँ पे L/2 पे क्या हो रहा है? तुम्हारा मैक्सिमम आएगा, L/2 पे मैक्सिमम आएगा। लॉजिकली तुम खुद सोचो ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होना चाहिए बीच में, ठीक है? तो अगर ये मैक्सिमम होगा तो पहले क्या होगा? यहाँ पे पहले भी कम होगा, बाद में भी कम होगा। सो क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, यस और नो? राइट? तुम उसका डबल डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, बट यूजुअली इट विल इंक्रीज देन डिक्रीज, यस और नो? Are you getting this? Tell me. सबको समझ में आया कि कैसे सॉल्व किया हमने? Raise your hand. स्नेक दो, तुम लोग इनइक्वालिटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? और इसमें ही मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट, राइट? सो पहली बात दो चीज है, तुम देख लो, दो चीज है, ठीक है? थिंक अबाउट इट। मैं सबको रब कर रहा हूँ, ठीक है? मैं सबको रब कर रहा हूँ, बिकॉज़ डोंट वरी, आई विल सेंड द सॉल्यूशन एनीवेज, ठीक है? तुम एक चीज सोचो, खुद सोचो, तुम्हारा du by dx का वैल्यू क्या आ गया? माइनस जी एम एम m1 m2 ब्रैकेट 1 by r plus l minus x का होल स्क्वायर minus 1 by r plus x का whole square, right? Okay, now tell me, if you put x is equal to L, put x equal to L, right? Right? Put x equal to L. So if you put x equal to L, what will be this value? Tell me. What will be this value? Minus g m1 m2, और माइनस साइन तो सिर्फ उसके लिए होता है ना, क्या हो जाएगा? यहाँ पे x equal to L पुट करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया? This is r 1 by r squared minus 1 by r plus L square. Yes or no? Right? And put x equal to 0. If x equal to 0 तुम पुट करोगे तो क्या होगा? माइनस जी m1 m2 क्या हो जाए बताओ? x 0 होगा तो क्या होगा? r plus L, right? This is r plus L square minus 1 by r square, right? Now if you talk about the value, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव छोड़कर तुम बस वैल्यू चेक करो. Do you think that there will be change in values in these two? Right? Now what we want to see is there's a point साइन स्कीम वाला कॉन्सेप्ट. यहाँ पे L/2 है ना? L/2 है, यहाँ पे x का वैल्यू L है, यहाँ पे x वैल्यू 0 है ना? So you are checking that at this point du by dx is 0. At this point du by dx is 0. तो इस पॉइंट पे L पे ये पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? Can you do that? स्निग्धो, tell me. Can you do that? है ना? तो अगर मान लो कि ये पॉजिटिव है, राइट? और मान लो कि ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव से 0 हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, यस वेवी कर्व, ऑब्वियसली वेवी कर्व ही होगा ना? सो नेगेटिव से 0 हुआ फिर पॉजिटिव हुआ, राइट? ठीक है?
तो अगर नेगेटिव से 0 हुआ फिर पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पे क्या आता है, मिनिमम बनता है। बट अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ, है ना, राइट, अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हुआ फिर नेगेटिव हुआ तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। गॉट इट? यस और नो? अब समझ में आया? तो तुम बस साइन चेक कर लेना है। ओके, ओके, right. Second one, a particle of mass 10 grams is kept on the surface of uniform. Okay, find the work need to be done against gravity force. ये तो basic formula putting getting है. Second one, yes or no? Right? We know that work done is basically negative of potential energy. Yes or no? Yes or no? Right? So work done is just negative of potential energy. Change in potential energy निकाल लेंगे, है ना? Right? Okay. So second one हो जाना चाहिए. Potential energy is minus gm1 m2 by r square. Sorry, gm1 by r, not r square. R square is force, na? Just give me a minute, guys. Something has happened to scroll. Okay, yeah. Right. So third one, everyone. Question number 3. A gravitational field due to a mass distribution in a space. Okay, there's some mass distribution in space, right? Okay, is varied as Ex is equal to a by x square. So gravitational field is given as a by x square. Right? A is a constant. Taking the gravitational potential to be 0 at infinity, the potential at x is. Now you have to find V. Yaad, if E is given, how to find V? Raise your hand. How many of you remember this? If E is given, how to find V? Very good, Sampada. So we know that V is equal to minus integration of E dot dl. Yes or no? Right? Yes? Correct. Integration. So V is equal to minus integration of E, which is a by x squared into dx. Yes or no? Simple enough. All of you can do it. Right, guys? Yes or no? Yes or no? So we know that A is a constant, right? A is a constant, है ना? A is a constant. So minus and integration of 1 by x squared is minus 1 by x into A constant. That's it, right? And it is said that potential at infinity is 0. So constant will be 0. So V will be what? Plus A by x. Easy enough, everyone got this? Preeti, Suhas, Varun, Yash, Yashika, Smarnika, Shankar, Sanjana, Roshni, Nazneen, मौर्य, सबको समझ में आना चाहिए। कौशिक, नहीं समझ में आया तो पूछो, है ना? बेसिक फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग है क्वेश्चन में 2 और 3. फर्स्ट वन वाज अ गुड कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम जिसको तुम एज अ थ्योरी भी याद रख सकते हो, है ना? बट सेकंड थर्ड वाज जस्ट फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग. ओके, two bodies of mass m and 4m are placed at distance r. Now this is the formula pudding getting. Yes or no? Tell me. Right, this is also formula pudding getting. Two bodies mass 4m and m, right, are kept at distance r. Okay, right, the gravitational potential at a point on line joining them where gravitational field is 0 is equal to, मतलब 0 यहाँ पे क्या है, जब ग्रेविटेशन फील्ड 0 हो रहा है, ग्रेविटेशन फील्ड 0 हो रहा है, E is equal to 0. So first you can calculate E over here. Yes or no? तो वहां से R निकला, E यहाँ पे क्या होगा, G छोटका m by suppose this distance is x, so this distance is r minus x. हम लोगों ने ऐसा क्लास में किया क्वेश्चन? You tell me. हम लोगों ने ऐसा क्लास में क्वेश्चन किया, हाँ या ना?
Tell me. Yes, because we know gm by x should be equal to g 4m. इसका मास 4m है ना, 4m by r minus x, right? So gm कट गया यहाँ पे, so r minus x is equal to 4x, right? So x is equal to r by 5, so ये r by 5 निकल गया, अब पोटेंशियल निकल जाएगा ना. Yes or no? Right? So अगर r by 5 निकल गया, so can you solve now? Can you solve the value of potential? Because when you talk about potential, potential is what? Sorry, यहाँ पे गलत हो गया, r square था, my bad, right? Square था, ठीक है, right? I actually used the formula of potential. Gravitation field 0 है ना, so this is potential. So I can say r minus x by r का whole square is equal to 4. So r minus x is equal to 2r, right? So r is, tell me, so okay, this is x now, x 2x, so r is equal to 3x, so x is equal to r by 3. Got it? My bad, I just took the formula of potential. Yes or no? Is this clear? So at distance r by 3, the gravitational potential we need to find, right? Because field will be 0. Field will be 0 at r is equal to x equal to r by 3. Now we just have to put this value in formula of potential जो मैंने पहले लिखा था. Yes or no? मैंने जो पहले लिखा था, which is minus g m by x plus minus g 4m by r minus x. तो यहाँ पे x की जगह क्या डाल दो? x की जगह पोटेंशियल का फॉर्मूला डाल दो. x की जगह सॉरी r by 3 डाल दो. So it is what? Minus 3 gm by x plus minus minus g4m by r minus r by 3 is 2r by 3. So it is 2r. यहाँ पे 3 हो गया. So I can solve this now. All of you can solve this now. Yes or no? Right? 2 times. है ना? So minus 3 minus 6 minus 9 gm by r. Any issues in that? Tell me. Any issues in that? Abhilash, Krish, समझ में आ रहा है? ओके, चलो क्लियर, ठीक है. नेक्स्ट, रेशमा, समझ में आया तुमको? रेशमा, टेल मी रेशमा, आर यू गेटिंग दिस? क्वेश्चन नंबर 4. ओके, चलो फिफ्थ वन. सो कंसीडर टू कन्फिगरेशन. कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या था? पोटेंशियल और फील्ड का कॉन्सेप्ट था, है ना? तो देखो कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला पुटिंग, गेटिंग कॉन्सेप्ट. जब भी सॉल्व करो ना, साथ में सॉल्व करते रहो मेरे साथ और लिख लो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट था. बिकॉज समटाइम्स व्हाट आई गेट टू नो फ्रॉम स्टूडेंट, समझ में ही नहीं रहेगी क्या करना, ब्लैकआउट हो गया. बिकॉज you should, if you understood the concept, if you remember the formulas, you should be able to solve, right? Okay, so consider two configurations of system of particles m, 2m, 3m. ठीक है, दिया हुआ है आपको. They're working by the gravity and changing the configuration of this figure to this figure. Now, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कौन बताएगा? शंकर, टेल मी, डू यू नो हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स? ऐसा प्रॉब्लम हमने क्लास में किया था एक बार. टेल मी, मैंने क्लास में हिंट दिया था. हाउ टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स? एनीवन? टेल मी गाइस, एनीवन हु कैन सॉल्व दिस? एनीवन? How to solve these questions? Tell me guys, how to solve these questions? याद है मैंने उसमें एग्जांपल दिया था? नो अनन्या, यहाँ पे अनन्या कॉन्सेप्ट एनर्जी पूछ रहा है ना अनन्या. एनर्जी वेक्टर है कि स्केलर? टेल मी. यही तो दिक्कत है. वर्क डन पूछ रहा है ना. वर्क डन वेक्टर है कि स्केलर? स्केलर. तो वेक्टर कॉन्सेप्ट आएगा भी नहीं ना, राइट? And we know that work done is what?
basic work done is equal to what? Minus of change in potential energy, yes or no? Minus delta U. Very good, Ankit. अब समझ में आया सबको ना? तो can you find potential energy of this initial potential energy and can you find potential energy of this final potential energy? So you just have to find the difference, yes or no. हाँ या ना? Tell me, yes or no. अब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बताओ, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि नहीं? राइट? और जब इसका पोटेंशियल एनर्जी है, सो आई टोल्ड यू, क्लास में लिखा मैंने, इसके इसके बीच, इसके इसके बीच और इसके इसके बीच, तीनों के बीच, और इसमें भी इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, इसके इसके बीच, राइट? यस और नो? है ना? फिर माइनस कर देंगे. क्लियर एवरीवन? गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियर्ड? राइट? सो बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड रहिए, बेसिक डेफिनेशन पे. सुप्तिका, यू आर गेटिंग? सुप्तिका, सुहान, जायन, नोट कर लो ना, नोट कर लो, ये चीज नोट कर लो, है ना? नोट कर लो. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट यूआई, मैं इनिशियल पोटेंशियल निकाल दे रहा हूं, तुम लोग फाइनल निकाल के सॉल्व करना. क्या हो जाएगा? माइनस जी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? m1 m2 by r, राइट? सो पहले इन दोनों के बीच में लूंगा मैं, तो क्या हो गया? बताओ, 3m into m by a, because this distance is a, this distance is also a, right? माइनस, या माइनस को मैंने बाहर रख दिया, कॉमन ले लिया, तो g 3m into 2m by, now this distance is what? root 2a, है ना? because obviously hypotenuse, root 2a, right? plus g this 2m into m by a, है ना? तो यहाँ पे g, tell me, g mm by a तो कॉमन हो जाएगा ना पूरा, this is ui, right? तो उसको सॉल्व कर लोगे, ui सॉल्व कर लोगे, कितना होगा बताओ? माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए, कॉमन हो गया. यहाँ पे क्या बचा? 3, यहाँ पे 3 बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा? 6 बाई रूट 2 और 3 रूट 2 एक्चुअली, राइट? बिकॉज रूट 2 से कट के 3 रूट 2 बचा, प्लस यहाँ पे 2, तो क्या हुआ? 5 प्लस 3 रूट 2, माइनस जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 5 प्लस 3 रूट 2. ये इनिशियल है, हाँ या ना? इन द सेम वे, कैन यू फाइंड द फाइनल? Tell me, can you find the final? फिर डिफरेंस ले लेना है. Got it? Yes or no? Got this? Yes or no? Any issues? चलो, okay, got it, very good, right? स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है ना? स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है? चलो, next, fifth is done. Now, sixth one is a theory. आराम से हो जाएगा. Sixth one is theory. ठीक है, right? Sixth का आंसर क्या होगा? Tell me guys. Sixth का आंसर क्या होना चाहिए? Just mess in the poll. Sixth one is theory. A person sitting on a chair in a satellite feels weightless because, simple, ये तो गलत है ना, राइट? कॉमन सेंस है, ये तो गलत है, बिकॉज अर्थ विल अट्रैक्ट, राइट? हाँ या ना? वेट किसके कारण फील होता है? जब तुम जब वेइंग मशीन पे खड़े होते हो, राइट, है ना? तुम mg फोर्स लगाते हो, तुम पे नॉर्मल फोर्स लगता है, यस और नो? राइट? सो बैलेंस तो हमेशा करता है, बैलेंस तो हमेशा करता है ना? तो ये भी गलत है, राइट? बैलेंस तो हमेशा करता है, तो वेटलेस थोड़ी फील करते हैं. बट अगर ये फोर्स लगे ही नहीं, ये फोर्स लगे ही नहीं, तो समझ में आया ना? राइट? आंसर इज एक्चुअली सी. ठीक है, आंसर इज सी. ओके, गॉट इट? नॉर्मली जीरो. वेरी गुड जैन, राइट? द आंसर इज सी. ओके, चलो. Seventh one is theory, right? Seventh one is totally theory. Kepler's second law. Second law is law of, tell me, second law is law of area. Yes or no? याद है? Right? है ना? Yes.
So क्या हो जाएगा? Equal areas in equal interval of time, which means tangential acceleration should be zero. Yes or no? Tangential acceleration zero है ना? Right? है ना? Total acceleration zero नहीं हो रहा है because again डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना? टेंजेंशियल एक्सेशन बिकॉज डायरेक्शन ऑलरेडी बोल चुका है, राइट? है कि नहीं? रेडियल एक्सेलरेशन भी गलत हो गया. रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? v हमेशा चेंज हो रहा है तो रेडियल एक्सेलरेशन चेंज होगा ना? यस और नो? राइट? हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे v चेंज हो रहा है, राइट? है ना? तो गलत हो जाएगा. तो आंसर इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0. नेक्स्ट, 8th one. Consider adjacent diagram where plant moves in an elliptical orbit. The speed of the plant will maximum at, tell me. ये हम लोगों ने किया है. स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगा? कॉमन सेंस बताओ. स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ होगा? करेक्ट, वेरी गुड. संपदा, सोचो संपदा, अगर ओमेगा क्या होना चाहिए? ओमेगा शुड बी सेम, राइट संपदा? खुद सोचो ना, ओमेगा सेम होना चाहिए. तो अगर यहाँ पे आर भी कम है, ओमेगा ज्यादा, स्पीड ज्यादा नहीं होना जाएगा क्या? राइट? लॉ ऑफ मिनिमम, सॉरी मिनिमम, यस मिनिमम, राइट. सॉरी, सबसे ज्यादा कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए. सबसे ज्यादा यहाँ होना चाहिए, है ना? राइट? बिकॉज एरिया ज्यादा कवर करना चाहिए यहाँ पे, राइट? और मिनिमम कहाँ होना चाहिए? मतलब मिनिमम कहाँ होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए बिकॉज वी नो ओमेगा सेम होना चाहिए. यस और नो? सॉरी, आई जस्ट, राइट? क्लियर है ये चीज? आया ना? ओके, नेक्स्ट, 9th one. 9th one. A very thin tunnel has been dug into a sphere, right? दिया हुआ है ना? The magnitude of gravitational field intensity क्या होना चाहिए? Sorry, answer is given in the question itself. देखो, आंसर इज दिस. समझ में आ रहा है? तुम लोग जो, हम लोग जो सॉल्व किया था, g इज इक्वल टू जी एम एक्स बाई आर क्यूब, राइट? ये जो हम लोगों ने सॉल्व किया था वो किसके लिए था? यूनिफॉर्म के लिए था कि नॉन यूनिफॉर्म के लिए था? ये जो फॉर्मूला था डेप्थ में, वाज दिस फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म? यू टेल मी. यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म, राइट? है ना? यूनिफॉर्म. वेरी गुड सुमनिका. नाउ इफ इट वाज फॉर यूनिफॉर्म, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, ये मास ही चेंज कर रहा है रैंडमली, तो कैन आई से एनीथिंग अबाउट जी? कैन आई से अबाउट जी? यू टेल मी. No, na? So what should be the answer? What should be the answer? C. Got it? Yes or no? Everyone got this? 9th one, right? Okay, chalo, 10th one. An artificial satellite of mass m is moving in a circular orbit at a height equal to r. So यहाँ पे हमको पता है ना, ये सवाल हम लोगों ने किया है, ऐसा सवाल हम लोगों ने किया है, right? Suddenly, due to internal explosion of the satellite breaks into two parts of equal pieces. One part of the satellite stops just after the explosion, right? The increase in kinetic energy of the system due to explosion will be. Now, think about it. Think about it. यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट यूज होगा? यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? टेल मी. What is the orbital velocity? Initial velocity जो होता है, orbital velocity, वो कितना होगा? Step by step. Conservation of energy और conservation of momentum, है ना? दोनों यूज होगा. Conservation of energy, yes or no? Conservation of energy and conservation of momentum, दोनों यूज होगा. Yes or no? Right? है ना? So what was initial velocity? Initial velocity was orbital velocity, which is what? Root gm by r. r क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, r is 2r because radius of earth plus extra r distance, so it is 2r.
Yes or no? This is your orbital velocity, which is initial velocity. Yes or no? Yes or no? Anyone have any issue in that? Raise a hand. Anyone have any issue in that? Right? हाँ है ना? Now यहाँ पे conservation of energy हम use करेंगे नहीं, because explosion हुआ ना, right? But conservation momentum use करेंगे because external force नहीं हुआ है, हमको change in energy ही निकालना है. Now when you talk about momentum, initial momentum क्या होगा? mv naught, because एक ही मास है. Yes or no? Right? Final momentum क्या होगा? अब ये दो मास में बट गया, m/2, और एक मास जीरो हो गया, जीरो प्लस सेकेंड m/2 और उसका वेलोसिटी v हो गया. हमको नहीं पता v कितना है, वो निकालना है. क्लियर है ये चीज? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड. यस और नो? राइट? सो कैन आई से सर v is actually 2v0? if you solve this 0, mm कट गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, v is 2v0, right? so initial kinetic energy कितना था? initial kinetic energy was half m v0 square, right? फाइनल kinetic energy कितना हो गया? kinetic energy final is what? half, अब मास तो m/2 है, राइट? और v0 की जगह क्या हो गया? 2v0 का होल स्क्वायर, राइट? निकल जाए डिफरेंस, निकल जाए डिफरेंस. टेल मी यस और नो? 4/2 से 2 हो जाएगा ये, राइट? सो 2 - 1, 2 - 1 है ना? टेल मी यस और नो? कैन यू कैलकुलेट दिस? कैन यू कैलकुलेट दिस? राइट? फिर v0 का वैल्यू डाल दोगे तो आ जाएगा आंसर. यस और नो? टेल मी कैन यू कैलकुलेट दिस नाउ? okay, just try to calculate and put the value. So as I said, it will be what? It will be, tell me, it will be just half m v0 square, because यहाँ से 4/2 से 2 हो जाएगा यहाँ पे, राइट? और यहाँ पे नॉर्मल है, माइनस को सिर्फ ये बचेगा, v0 वैल्यू पुट कर दोगे gm/2r, तो 4 हो जाएगा, 1/4 gm/r, gmm/r/4 हो जाएगा. छोटा g पुट करोगे तो c should be the answer, right? okay, now 11th one बताओ. 11th one, three planets of same density have radii r1, r2 and r3, right? r1, r2, r3 relationship दिया हुआ है. gravitational field at g1, g2, g3, escape velocity v1, v2, v3. consider the following. ये तो easy है ना, right? ये तो easy है. very good student though. so g we know, g is what? g capital M by r square, है ना? right? so g का r के डिशन में बन जाएगा. now escape velocity is what? √2gr. तो ये रेशियो लेके हो जाएगा. यस और नो? टेल मी गाइस, यस और नो? ये रेशियो लेके हो जाना चाहिए. टेल मी यस. ओके, चलो, वेरी गुड देन. तो रेशियो लेके हो जाएगा. 12th, consider the following parameter for a geostationary satellite in a circular orbit. now ये तुमको geostationary orbit तुम भूल जाओ, ये बस ऐसे ही बेवकूफ बनाने के दिया हुआ है. ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? टेल मी, ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? और व्हेन यू टॉक अबाउट टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई रूट l by g. यस और नो? 2 पाई रूट r by g. किस पे डिपेंड कर रहा है हर चीज? टेल मी. g जो है, g किस पे डिपेंड कर रहा है? g डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लैनेट. यस और नो? g डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द प्लैनेट. यस और नो? g is gm by r plus h, जो भी बोल लो तुम, है ना? होल स्क्वायर, राइट? तो क्या लगता है, क्या आंसर होना चाहिए यहाँ पे? क्या होना चाहिए? मास और हाइट. यस और नो? मास और हाइट, मास ऑफ अर्थ एंड हाइट. आंसर शुड बी व्हाट? मास और हाइट हो गया, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस पे भी डिपेंड किया ना,
right? Because ye radius of orbit is actually the same as r plus h. Yes or no? Right? So answer should be what? ये और ये. क्या हो गया आंसर? डी. क्लियर है? मार्क्स ऑफ स्लाइड डिपेंड नहीं करता ना. वी नो दिस, राइट? ओके. 13. अगर कैपिटल जी डिक्रीज होता है, कैपिटल जी अगर डिक्रीज होता है तो क्या चेंज होगा? I hope all of you can answer this right now, because I just told you time period is what? 2 pi root L by G. है ना? L is the distance और G is what? Capital GM by R square. Sorry guys, again it got disconnected. पेज नंबर एक्चुअली नहीं आना होता है, right? So as I told you, tell me, right, if this G will change, what will happen to time period? It is inversely proportional, right? If it is inversely proportional, what will happen? Tell me. No, think about it ना, इतना जल्दी मत करो, सोचो एक बार. Because you're just seeing this, you're not seeing this, right? ये भी तो change होगा ना. Why? Because think about it. Think about it. If G will decrease, what will happen to force? Force will also decrease. Yes or no? Right? Now, if force will decrease, think about it. अगर जो attractive force है वो decrease होगा, तो Earth will move farther. Yes or no? Radius will also increase. Yes or no? Think about it, na? Yes or no? The radius of the path will also increase. Don't you think? Yes or no? Right? समझ में आ रहा है? So you have to see कि क्या क्या हो रहा है. Okay. Fine. The actual answer would be D. ठीक है? तो एक बार पूरा अच्छे से एक बार सोचना है इसको. ठीक है? अच्छे से. Okay. Next. 14th. A planet is revolving around the sun in elliptical orbit. The instantaneous power of gravitational force. Okay. So what is the formula of power? Tell me, what is the formula of power? F dot V. Simple. Yes or no? Right? Yes or no? Power का formula ये होता है ना? Yes or no? हाँ या ना? Yes. So क्या होगा इसका आंसर? Don't you think that when you talk about this, right? At this point, velocity is in this direction, force is in this direction. Yes or no? Right? तो बताओ यहाँ पे power क्या होगा? Force is in this direction, right? Toward the sun, and velocity is in this direction, and it is 90 degree. At this point, it is 90 degree. In the same way, यहाँ पे भी क्या होगा? ऐसे और ऐसे, यहाँ पे भी 90 degree. So F dot V zero होगा कि नहीं होगा? Zero. But क्या हमेशा zero होगा क्या? नहीं ना, because it is not a circle, right? It's an ellipse. So at any random point, it is not 90 degree. ये 90 degree नहीं है, not 90 degree, because it is an ellipse, right? Yes or no? हाँ या ना? Right? But यहाँ पे 90 degree होगा, यहाँ पे 90 degree होगा. So only at 4 point it will be 90 degree. Only 4 points. So what is the correct answer? That in some parts of the orbit, A. Yes, correct. Correct.
right? 15th, two spherical bodies of mass m and 5m and radii r and 4i respectively are released in free space with initial separation of a. Now tell me, यहाँ पे कौन सा concept use होगा? You tell me, which concept is used over here? ये अच्छा क्वेश्चन है. Question 15 is actually a good problem. Question 15 is actually a good problem. Right? Gravitational force तो होगा ही. So what is the formula? If you see this, think about it. Two bodies of mass m and 5m and radii r and 2r are released respectively, right? तो दोनों के पास initial acceleration होगा, yes or no? A1, A2, yes or no? Yes or no? So A1 is what? A1 is force by mass m, yes or no? And A2 will be what? Force by mass 2m, sorry, mass 5m. And force का formula क्या होगा? Force is G into 2m, sorry, into m into 5m by, tell me, by what? ये distance between this center is 12r. The distance initial is 12r whole square. Yes or no? Yes or no? Right? Initially. But तुमको क्या निकालना है? तुमको तो at any point निकालना है ना? तुमको तो any point निकालना है. Yes or no? You have to find at any point. Right? है ना? Yes or no? Yes or no? Okay, guys. Sorry for the noise, but now think about it. Are you getting the concepts? Yes or no? Tell me, are you getting the concepts? ये समझ में, यहाँ तक समझ में आया? Okay, now think about it. Suppose we have a mass here and a mass over here, right? ये दोनों मान लो यहाँ पे कोलाइड कर रहा है. मान लो it is colliding at this distance. यहाँ से लेकर यहाँ तक जो distance है वो x है. क्या है? X है. Now same problem will be asked in electric current by electric field by the way. Same problem. Total distance was what? अब देखो सेंटर से दोनों डिस्टेंस था कितना? 12 और इसका रेडियस r, इसका रेडियस 2r है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया? 9r, राइट? यस और नो? तो ये जो डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9r minus x, राइट? बिकॉज सेंटर से 12 है ना, सेंटर से 12 है, राइट? Now don't you think that if you can find x, you can find everything? Yes or no? Yes or no? Right? Hi Anna. Right? So I can say जितने टाइम में स्मॉल वाला x डिस्टेंस कवर किया, उतने ही डिस्टेंस में बड़ा वाला 9r minus x कवर किया. Yes or no? Yes or no? Right? Hi Anna. Yes. So can I say, sir, x is equal to what? Half, because initial velocity is 0, right? Initial velocity is 0. So क्या होगा? Half small वाले का a1 t square और 9r minus x क्या होगा? Half बड़े वाले का a2 into t square. Yes or no? Tell me. Hi Anna. Hi Anna. Right? और a1 क्या था? a1 is force per unit mass और force क्या था? G capital M. Yes or no? Tell me. Right? और एक्सप्रेशन क्या है? सिंपल छोटा वाला g है ना, इट इज जस्ट छोटा वाला g, so it is g into m, इसका m which is mass m by ये डिस्टेंस कितना होता है? What is this distance? Tell me. This distance, ये total distance 12 है, minus x 12 r minus x का whole square. Yes or no? इस पॉइंट पे yes or no? ये हो गया g1 which is actually a1. In the same way, what is g2? G2 is what? G mass क्या है इसका? 5m है, 5m.
भाई डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया बड़े वाले का, फोर्स तो सेम है ना भाई, तो सेम ही होगा ना, यस और नो। फोर्स अगर सेम है तो सेम लेंगे ना, फोर्स तो सेम है ना, फोर्स में तो ही चेंज होता है, यस और नो। ये जो 5m लिए हैं, राइट, 5m क्यों हुआ, बिकॉज बाई एम हो गया ना, यस और नो, राइट। वेट, यहाँ पे बड़े वाले में 5m हो जाएगा बिकॉज छोटा वाला m कट गया, और छोटे वाले में ये हो जाएगा बिकॉज बड़े वाले का एक्सप्रेशन, ये छोटे वाले एक्सप्रेशन बड़े वाले कारण होता है ना, और बड़े वाले का एक्सप्रेशन छोटे वाले कारण होता है, यस और नो, राइट, यस और नो। बिकॉज फोर्स क्या होगा, G m1 m2 बाई m1 in case of G1 and by m2 in case of G2, that's why। अब ये निकल गया, पुट करके इक्वेट कर लोगे, इक्वेट करके x आ जाएगा, यस और नो। तो बस इक्वेट करना है, दैट्स व्हाई इट इज अ गुड प्रॉब्लम, इसको ध्यान देना, 15 इज अ गुड प्रॉब्लम, ठीक है, नोट कर लो, स्टार मार्क कर लो, 15 इज अ गुड प्रॉब्लम, राइट, नोट कर लेना है इसको। बिकॉज अभी क्या करोगे, फिर इसको डिवाइड कर लोगे ना, डिवाइड करो तो t² कट गया, उनको रिलेशनशिप आ जाएगा x के टर्म्स में, ओके। ना क्वेश्चन नंबर 16 गाइस, 16 एक बार पढ़ लो जल्दी जल्दी। Okay, 16th is based on what? What? Conservation of energy, yes or no? हाँ या ना? Just conservation of energy, just, और कुछ करना ही नहीं है, simple conservation of energy, right? Initial potential energy, initial kinetic energy is equal to final kinetic energy plus final potential energy, और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। तो इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, राइट, जब हिट करेगा अर्थ पे तो पोटेंशियल जी पता चल जाएगा बिकॉज डिस्टेंस आर ही होगा, सो इट इज व्हाट -G m, राइट, मास ऑफ अर्थ m1 मान लेते हैं, m बाई 10 RE, 10 RE, यस और नो, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ m vi² is equal to final potential is -G m1 m by RE plus half, अरे यार हमेशा इसको मूव करता हूं, okay, yeah, right, so half mv² है ना, तो इस सबको उधर ले जाओ, बस तुमको mv² चाहिए, v² चाहिए। now can you solve it, now can you solve it? sorry I was mute। तुमको सॉल्व भी नहीं करना है, तुमको बस v² का टर्म चाहिए, कितना इजी हो जाएगा, इसको उधर ट्रांसपोज करोगे तो 1/10 वाला निगेटिव में रहेगा, तो ये कट गया, है ना, यस और नो, राइट, राइट, एनी इश्यूज इन दैट, प्लस हाफ वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो इसमें 2 वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज़ हाफ है ना, तो हाफ वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 वाला टर्म आ जाएगा, राइट, तो 2 वाला टर्म रहेगा, ये हो गया पोटेंशियल फार्मूला, और vi² तो सेम तो यही होगा ना, यस डायमेंशनली ये गलत है, ये डायमेंशनली गलत है, राइट, राइट, ये तो सेम है ना, ओके, मास, करेक्ट, और यहाँ पे मास ऑफ अर्थ होगा बिकॉज mm तो कट रहा है ना, mm तो कट जा रहा है, राइट, ये mm के हिसाब से गलत हो गया, तो वो सॉल्व ही नहीं करना है, दैट्स करेक्ट आंसर, ओके। चलो ना 17th बताओ, 17th, 17th क्या लग रहा है, थ्योरी है, व्हाट इज द आंसर ऑफ 17th? फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड,
formula based. If you remember the formula, you should know that, sir, potential energy is equal to what? Potential energy is what? Minus 2 kinetic energy. Yes or no? Right? Total energy is equal to what? Minus kinetic energy. Yes or no? And what? Total energy is inversely proportional to 1 by r. Yes or no? राइट, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर हो जाएगा. तो ऐसे ऐसे ग्राफ तो ऐसे होगा, राइट. और ये निगेटिव होता है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों निगेटिव होता है. यस और नो? राइट, दोनों निगेटिव होता है. और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव. सो सबसे बचा है कौन सा क्या है? सबसे बचा है कौन सा क्या है? टेल मी, यस और नो? राइट, सो आंसर इज व्हाट? A is kinetic energy, simple, right? And B and C is potential energy and total energy. Yes or no? Okay, chalo, got it. 18th rate of change of weight near the earth's surface varies with height as this. Okay, rate of change of weight varies as this. Find the value of x. Now, what's the meaning of rate of change of weight? Tell me, you tell me. फॉर्मूला जो होता है g का, राइट, g का वेट फॉर्मूला क्या होता है? जब तुम ऊपर आते हो तो और बहुत ज्यादा x नहीं है तो, याद है? g dash is equal to g 1 minus 2h by r. Yes or no? Tell me, yes or no? राइट, तुमसे एक्चुअली क्या पूछ रहा है? dw by dw by dh पूछ रहा है ना, which is actually dg dash by dh पूछ रहा है. Can you do that? Can you do that? इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कौन सा टर्म आएगा? 2 आ जाएगा ना. Yes or no? Right? Tell me, because ये तो 0 हो गया. So g into this, so it will be 2g. Yes or no? 2g, because dh by dh 1 हो गया, so 2g by r. Yes or no? Yes or no? dh by dh is not zero side. dh by dh 1 हो गया ना, right? h का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1. So simply 2g by r. So what is this x? x का वैल्यू क्या हो गया? You tell me, what is the value of x? क्या लगता है? 2. Correct. Very good, Simko. Right? X value 2. Any issue in that? किसी को issue है इसमें? किसी को issue है? Okay, चलो, clear. Next. 19.1 याद है? 19.1 जैसा कुछ याद है? Yes or no? क्लास में मैंने समझाया था कि ऐसे सवाल कैसे करते हैं 19.1 वाले. कितने लोग याद है? हाँ, चलो, कितने लोग याद है? कितने लोग याद है? संपदा को याद है? क्लास में मैंने करवाया ऐसा सवाल, क्लास में, सुपरपोजिशन वाला, राइट? जहां पे हम क्या कर रहे थे? हम दोनों को मान लेते फिर माइनस कर दे रहे थे, राइट? कैविटी इज नेगेटिव मास. यस और नो? हाँ या ना? यस और नो? सो कैन यू सॉल्व इट नाउ? कैन यू सॉल्व इट? एक्चुअली ये क्लास में करवाया हुआ सवाल है ना? तुमको रेशियो लेना है सिर्फ. सो कैन आई से सर, टोटल जो होता है, राइट, टोटल जो होगा, टोटल मान लो f है. f क्या होता है? f इज व्हाट? टोटल इज g m1 m, राइट? यहाँ पे m है ना, बाय डिस्टेंस इज 3r का होल स्क्वायर. यस और नो? दिस इज टोटल. हाँ या ना? हाँ या ना? राइट? और दिस इज टोटल. और कैविटी के कारण ये डिस्टेंस कितना हो गया है? व्हाट इज द डिस्टेंस ड्यू टू कैविटी? कैविटी का मास तुमको पता है ना, m डैश, हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट करके थे. इट इज m by 8, बिकॉज रेडियस हाफ हो गया तो वॉल्यूम 1 by 8 हो गया ना. वॉल्यूम 1 by 8 हो गया तो, राइट, मास 1 by 8 हो जाएगा. यस और नो? तो f ड्यू टू कैविटी क्या हो जाएगा? g, दिस मास इज m1 by 8 into m.
बाय, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकल जाएगा, दिस डिस्टेंस इज व्हाट 2r, और निकल जाएगी नहीं निकलेगा, टेल मी यस और नो, राइट, तो कैविटी निकल जाएगा, कैन यू सॉल्व इट नाउ, टेल मी कैन यू सॉल्व इट, रिमेनिंग के लिए क्या होगा, रिमेनिंग इज टोटल माइनस कैविटी, यस और नो, रिमेनिंग के लिए टोटल माइनस कैविटी, सिंपल, हाँ या ना, फिर रेशियो ले लेना है, ओके चलो ना 21 तो क्लास में किया हुआ है हमारा, 21 हो जाएगा वेल में कंजर्वेशन मोमेंटम यूज करके, 20 अच्छा सवाल है बाय द वे, 20 अच्छा सवाल है, कंजर्वेशन मोमेंटम ही यूज होगा, स्टिल इट इज अ गुड प्रॉब्लम। टेल मी, a particle of mass m is projected from the surface of earth with velocity v naught making angle theta with horizontal, right, so this is your earth surface, right, and a mass is projected and this angle is theta, ये दिया हुआ है फर्स्ट लाइन, got it, everyone got this first line, raise your hand, everyone got this first line, Yash, Zen, Suhas, Reshma, Roshni, Shankar, है ना, okay, suppose the h is the maximum height of the particle from the surface of earth and v is the speed at that point, so ये ऐसे गया ना, ये ऐसे गया, फिर ऐसे होके ऐसे आ गया, right, yes or no, it is like that, right, so it is like a projectile, it is like a very big projectile, yes or no, so what concept we have to use over here, what concept we have to use over here, tell me, first of all when talk about concept, which concept we have to use over here, Shanti, tell me Shanti, which concept, is there any external force, is there any external torque, tell me, is there any external torque, no na, no, right, no, so can we use the concept of angular momentum conservation, tell me yes or no, right, है ना, तो if I can say this velocity is v naught, what is this velocity, this velocity is v naught cos theta, है ना, because whenever we talk about momentum we talk about the tangential component, right, yes or no, है ना, so initial momentum in this direction is what, actually it is what, we know now it is cross r, right, that's why the angle will be, right, the angular momentum would be because of this component only, so it is what, m v naught cos theta into this radius is r, initial momentum is equal to final momentum, अब final momentum में क्या हो गया, ये total distance हो गया ना, और यहाँ पे ये velocity v दिया हुआ है, is what m v जो चाहिए मुझे, और ये total distance कितना हो गया, what is this total distance, what is this total distance, ये r है और ये h है, बोला दिया ना h है, it is r plus h, right, yes or no, तुमको v पूछ रहा है ना भाई, तो v क्या हो गया, v is equal to what, v naught into r by r plus h into cos theta, yes or no, तो tell me r बड़ा है कि r plus h बड़ा है, r बड़ा है कि r plus h बड़ा है, obviously r plus h बड़ा है ना, so don't you think that this value v is less than v naught cos theta, yes or no, yes or no, got this, yes, clear, is this clear, is this concept clear now, every problem is a concept, every problem of TPP is a concept, right, that's why you have to clear your doubts, ठीक है, ओके चलो वेरी गुड, सो 20 तक हो गया हमारा,
Next 21. In the previous question, maximum height of the particle is. अब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा? नाउ कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा? मैक्सिमम हाइट के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? वहां पे कंजर्वेशन मोमेंटम, यहाँ पे क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस और नो? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यस और नो? प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे होगा तुमको पता नहीं है ना, राइट? तो प्लेन सर्फेस नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज होगा, राइट? So how conservation of energy used? Tell me. Tell me. Initial potential energy कितना था? What is initial potential energy? mgr. Right? Initial kinetic energy क्या था? Sorry guys, I was just sneezing. Okay. Yeah. Or I can just say, right? I can just say that change in kinetic energy, right, minus delta U is equal to delta K. Hayana. Right? Or minus delta K is equal to delta U. So here, what is happening? Sorry guys, what is happening? Potential energy is increasing or decreasing? Potential energy is increasing or decreasing? Tell me. What is happening to potential energy? Potential energy is, tell me, decreasing, right? है ना? And kinetic energy, right? So can you say that, okay, initially it was delta V minus delta K, क्या होगा? Half m V naught square minus half m V square. Yes or no? Yes or no? Right? This is change in minus delta K. Or what is this? Delta U. Delta U is what? Tell me. Minus mg. Now, this is not R, right? It is when you talk about G. So G will be what? I hope you remember. It will be H plus R by 1 plus H by R ka whole square. Yes or no? Or wait. I'll just use the basic formula. Then I'll rearrange it. Okay? Then you guys will understand. It will be what? Minus G mm by R plus H whole square. Yes or no? हाँ या ना? Yes or no? तो अगर यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, मैं R को कॉमन ले लूंगा, है ना? R को कॉमन ले लूंगा तो मेरा आ जाएगा, yes, right? और माइनस माइनस प्लस G mm by R. Any issues on that? So you have to find H. You have to find H. तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा होगा बिकॉज V की जगह पे हमको पुट करना पड़ेगा, राइट? V की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा? याद है? V नॉट R cos थीटा by R plus H. तो कैलकुलेशन काफी गंदा होगा, है ना? बट यू हैव टू सॉल्व एंड सी. ठीक है? ओके, राइट. 22 क्लास में किया हुआ है हम लोगों का, स्क्वायर पे रखा जाएगा तो क्या होगा? तो 22 हम लोगों ने क्लास में कर रखा है. ठीक है, 22 हो जाना चाहिए. ठीक है, 23 इन क्लास एक्सरसाइज में सवाल किया है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, ये हो जाएगा. (24) two concentric shells of M1 M2 are having radii R1 R2. Which of the following is the correct expression for gravitational field on the mass m kept at the distance r from the common center of the shell? Now we know that, right? Depending on the values, है ना? अगर r less than r2 है, r is less than r2,
ठीक है, राइट? तो फील्ड विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ R1, फील्ड विल बी जस्ट बिकॉज ऑफ R1। अगर R1 से कम है तो फील्ड होगा ही नहीं, वी नो दैट, दिस इज रॉन्ग। R2 से कम है तो फील्ड R1 के कारण होगा, R2 के कारण नहीं होगा, राइट? फील्ड अगर R1 R2 के बीच में है, R1 R2 के बीच में है तो R पे डिपेंड करेगा, नॉट, है ना? और ये M1 अगर R1 R2 के बीच में तो M2 होगा, नॉट M1, तो ये भी गलत होगा। आंसर इज सी। बेसिक फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ करना ही नहीं, कुछ सॉल्व भी नहीं करना है। You don't have to solve anything. You don't have to solve anything in this. Okay? Now 25th, four similar particles. Okay? ये तो बेसिक फॉर्मूला होना गया यार। Yes or no? Tell me. हाँ या ना? खुद सोचो एक चीज। Don't you think that at any point, net force is equal to mv square? F net is equal to mv square by r? Yes or no? Yes or no? You tell me. Yes or no? Yes or no? हाँ या ना? राइट? अब इस पे बाकी तीनों का फोर्स निकालना है, निकल जाएगा। हम लोगों ने निकाल रखा है स्क्वायर वाला केस, दिस इज स्क्वायर, राइट? सो इन तीनों का कारण इस पे फोर्स निकालना है, तो इसका फोर्स किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इसका फोर्स किधर होगा? इस डायरेक्शन में। इसका फोर्स किधर होगा? राइट? अट्रैक्टिव है ना, तो इस डायरेक्शन में। नेट फोर्स निकल जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। v निकलेगा, राइट? गॉट इट? यस और नो? टेल मी। तो ये एंगल 45 पता है? 45 पता है, तो ये कंप्लीट हो गया क्या? f cos थीटा, ये भी f cos थीटा और ये f, so 2f cos थीटा प्लस f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। और f का वैल्यू क्या होता है? f इज इक्वल टू व्हाट? g m1 m2, और यहाँ पे दोनों सेम है, बाय a स्क्वायर। so f is g m squared by a square। yes or no? yes or no? तो हो जाएगा, पुट करने से हो जाएगा ना, राइट? एनी इश्यूज ऑन दैट? TPP1 में सबको समझ में आया? एवरीवन गॉट दिस? TPP1, टेल मी, TPP1 सबको समझ में आया? एवरीवन? रेणुका, रोशनी, रेशमा, संपदा, शंकर, स्मरणिका, सुहान, प्रीति, प्रवलिका इज नॉट हियर, प्रशस्ति इज नॉट हियर, प्रशस्ति इज हियर। प्रशस्ति, समझ में आया तुमको? प्रशस्ति, these are actually good problems, these are conceptual problems, ठीक है? ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहां पे सोचना पड़ेगा, राइट? सो यू जस्ट हैव टू सॉल्व। एक बार अपने से एक बार सॉल्व करना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा बाय द वे, हाथ चलाना एक बार, ठीक है? लगा नहीं कि सारी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, इवन दो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं, तो वो ओके। सो वी आर डन विथ TPP1। TPP2 तुम लोग अभी टाइम रहेगा तब बनाना, ठीक है? धीरे धीरे बातें रहना, तो अब मैं कल नहीं बोलूंगा बनाने के लिए, टेक योर टाइम, ठीक है? बिकॉज moving forward we will be having one, out of all the classes we will be having one online doubt solving sessions, ठीक है? right? normal class sessions होगा, one online doubt solving sessions भी होगा, ठीक है? तो हम लोग हर हफ्ते वैसे जो भी ये डिस्कशन होगा वो कर लेंगे, ओके? so from tomorrow onwards हाँ मैं भेज दूंगा संपदा, because actually some people were traveling ना, that's why, so actually कुछ कैंसिल हो गई थी। आशीष सर का, मोस्ट प्रोबब्ली आशीष सर का आज क्लास होने वाला था दूसरे क्लास में, ओके? सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा चेंजेस था, सो आई विल सेंड इट टुडे, ओके? सो आई विल बी स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, ओके? न्यू चैप्टर फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। सो इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज watch the videos of 9.1। can you do that? can you do that? 9.1 का वीडियो देख लोगे? 9.1, just 9.1, ओके? और ग्रेविटेशन सबको समझ में आया कि नहीं आया? टेल मी, आया ना? रिवीजन करते रहना, रिवीजन करते रहना, रिवीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रिवीजन नहीं करोगे ना तो भूल जाओगे, सब कुछ भूल जाओगे, राइट? तो मैंने ग्रुप में मैंने, हाँ, तो जो ग्रुप में मैंने इजी वाला भी सॉल्यूशन, इजी वाला मॉडल भेजा ना, ग्रुप में मैंने इजी वाला भेजा है,